कोई वर्क दिया था? कोई वर्क दिया था? अब आपके पास वर्क रहेगा आज से, ये काम आपको करना है एसटीबी का, ठीक है? अब फोर्स एंड फील्ड वाले काम कर सकते हैं, ठीक है? तो फोर्स वाले फील्ड एंड काम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 कैन वी डू, क्वेश्चन नंबर 2 यस यू कैन, 3 4 5 बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही, ठीक है? अब हम एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। एक्सलरेशन, हाँ, कल जो हमने डिस्कस किया था, पहले आपको बता दें, कल हमने डिस्कस किया था हम अर्थ के इनसाइड को फील्ड पे, अर्थ के इनसाइड की फील्ड को, अर्थ के इनसाइड का फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स होते हैं। ग्राफिकली हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को दिखाना हो, सिंपली मैग्नीट्यूड, यू कैन यूज दिस कोऑर्डिनेट टू। तो इनसाइड में क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड आउटसाइड में क्या होता है? पैराबोलिक। It's a no, it's a hyperbolic. It's a hyperbolic because it is inversely proportional to the square of the distance. It's a hyperbolic curve. This is a straight line. As the field is directly proportional to the x. Okay. जहाँ पे surface पे when x is equal to r at the surface, this is x is less than r. This is x is greater than r. Inside point. This is the inside. This is at the surface. At the surface. भाई at the surface पे maximum field होता है. The maximum magnitude of field is at the surface, E max. And what is the value of the E max? It is the Gm divided by R square. Okay. The field is reducing now, and field tends to, when x tends to infinity, the field tends to 0. The field tends to 0. But the field is exactly equal to 0 when x is equal to 0 at the center only. Okay. So at the center only, yes, of course, at the center only, at the center only, but not other than the center, the field could be 0. The field is 0. सिर्फ एक ही पॉइंट पे, only and only at the center, the field is 0. Nowhere else field cannot be 0. Nowhere else the field is 0. The field tends to 0 when x tends to infinity, but not exactly equal to 0. Not exactly equal to 0. Tends to 0. 0 के काफी करीब होगा, but not exactly equal to 0. Okay. Was clear, Harsika? Yes, sir. Yes. आप एक बोलो. At the center, the field is maximum. At the center, the field is maximum, and the value is known as G. Sorry, yes. At the surface. At the surface, the field is Gm by R square. And inside the point, the field, what is the value inside? यहाँ से आता Gmx by R cube. Gmx upon R cube. So field is directly proportional to the x. And outside point, outside, this is inside. This is inside. याद रखना पड़ेगा. This is outside. And outside के लिए जो field की value आता है Gm upon x square होता है. Get it now. This is the magnitude. What was the direction? Always inward. So towards the center. Okay. This is for the earth. This is for the earth. ये सब कुछ अर्थ के अंदर में ऐसा ही हम देख रहे हैं. Inside the earth, outside the earth. G field for the earth.
अब हम थोड़ी अर्थ से रिलेटेड बात करते हैं. J field for the earth. Where's your mask? Where's your mask? Put your mask. You should not. Okay. Now the acceleration due to gravity G. हमें पता है कि एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी और फील्ड दोनों की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है. सो व्हाट वाज एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज द gm. इट कुड बी द डिफरेंट थिंग. इट कुड बी द डिफरेंट फॉर ऑल द थिंग्स. अलग अलग चीजों के लिए अलग लगाने वाले. इनसाइड के लिए अलग, आउटसाइड के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग. ओके. So number A, at the surface of the earth, so it is equal to E naught. It is actually G naught. The value is simply, the numerical value is equal to the E naught. Yes, sir. And the values are equal to gm upon r square. So this is G naught is gm upon r square at the surface. कहाँ पे? नहीं, ये तो r square ही है. यहाँ लिखा था. Just slip of it. Slip of it. gm upon r square. Okay. And this is the maximum value. This is the G max. Surface पे maximum field होगा, maximum action due to gravity होगा. Okay. Number B. At the height h above the surface of the earth. आमतौर पे h लेवल के अकॉर्डिंगली आता है कि भाई हमारे ये अर्थ ऐसे है तो इससे h लेवल ऊपर क्या हो जाए? Above the surface h level. What's the action due to gravity at this point? So we can say this height is r. What is the value of x? It is r plus h. So we can say, okay, the field is downward, the action due to gravity is also downward. Both is downward. Yes. What is the value?
The G can be equal to Gm upon R plus H whole square. Okay. It can be also equal to the Gm. Can we take the R square to be the common? Okay. It can be equal to 1 plus H upon R whole square. Okay. This Gm upon R square is equal to known as G naught. Can we write it as it's the G naught 1 plus H upon R whole square of it. Got it? Okay, make the note. हाँ ये कैसे कर लिया? कुछ नहीं किया. हाँ R को यहाँ पे कर लिया बाहर. तो हमने एक R को बाहर कर लिया तो आ गया यहाँ पे. स्क्वायर को छोड़ दिया यहाँ पे ऐसे से कर दिया ऐसे. नाउ नो प्रॉब्लम. ये देखना इसमें से R को बाहर इसके पास R है तो 1 आ गया. इसके पास R नहीं था मैंने एक R से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया तो बन जाते हैं H अपॉन R. स्क्वायर है स्क्वायर आ गया तो R स्क्वायर आ गया. नहीं आ गया? Again, we can have the G is equal to G naught 1 plus H upon R. ये तो ठीक है ऐसे. This is one of the important, the general formula. We have some special case. If H upon R is very less than 1, if H upon R is very less than 1, that is H is very less than 1. R. भाई R तो बहुत ज्यादा है. What is the radius of the Earth? 6400 kilometers. So with respect to the 6400 kilometers, should be 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1000 meter even. 1 kilometer. Negligible. H is very less than 1. Even 2 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer, 50, 100 kilometer even 100 kilometer. With respect to the 6400 kilometer, 100 kilometer itself is a very small. So even 100 kilometer above, yes, H is very less than 1. Okay. So can we write some approximation here? Is should equal to the G naught. It is 1 plus H upon R. Can we put here minus sign? Minus 2 power. ऊपर ले आया. Minus 2 power ऊपर लेके आ गया. लेकिन जब H upon R काफी कम होते हैं तो it can be equal to 1 minus 2H upon R. अभी मैं बताता हूं इसको why it is. So this is a very special formula for this. When H is very less than R. अब हमें इतने स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती है. सिंपल कैलकुलेशन हो जाते हैं. ये लाइन तो ये तो बहुत पहले हो चुका था.
in support of this, we have some mathematical relation. If we have, if x is very, very less than 1, if x is very, very less than 1, 1 plus x and power is n. It can be equal to 1 plus power is simply multiplied to it, nx. If it is 1 plus x and power is minus 1, it is 1 minus nx. It is 1 minus x power is n, 1 minus nx. 1 minus x power is minus 1, 1 plus nx. So in support of this, okay. The region is simply the binomial expansion. It is simply because of the binomial expansion. Binomial? Yes. You will get, you can prove it by the binomial expansion. Yes. So this is very special case. If h is very, very less than r, that is h upon r should be very, very less than 1. And that's why 1 plus hr power is just multiplied 1 minus 2h upon r. Yes. So हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया. अगर ऐसा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, then we have to apply this one. If h is not very, very less than r, if h is very comparable, r by 2, r by 3, something like this one, yes, we can use direct formula. If h is very small, we have to use this formula. Next, the C part. At the depth, d, आमतौर पे h भी इस्तेमाल करते हैं. Depth h, height h, depth h, you can all दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, at the depth d, below the surface of the earth, below the surface of the earth, you can properly visualize it by the proper diagram. Depth means below the surface. Below the surface anywhere. If you're here, this is the depth. If you're here, this is the depth. Yes. Anywhere. So this is D. The D depth or H depth sometimes if it is. What about this X? R. Oh yes, in terms of R. In terms of R, X can be equal to R minus D. In terms of R, X can be equal to R minus D. But what about the field inside? This is the inside point. We have to find the G inside. What is the G inside? You have to find the G inside. You have to imagine about the field inside. Oh, both are not exactly the same physical quantity, but both have the same mathematical formula. That's why we are writing the same equalities. Only mathematical relation is same. No. It's not the magnitude की वजह से नहीं. Direction, both have the same direction, both have the same mathematical formula, but both are the different physical quantity. Simply. So G inside, A inside can be equal to, yes, it is the GM X divided by RQ.
So just in place of x, we have to put r minus d. Yes. So it is the gm r minus d divided by r squared. Of course, यहाँ पे r square रख दो और put here r here, r cube. It is r cube. Why gm upon r square? Because we want to note in terms of the g naught. This is the g naught, the acceleration due to gravity at the surface, the maximum acceleration. The maximum acceleration could possible is g naught. So what is the g inside? Once again, we can write it the g naught and 1 minus d upon r. G inside. And this is exactly equal. This formula is exactly equal. But this formula is approximately the sign of approximation, not exact. Here it is the exact g naught 1 minus. यहाँ पे 2 very similar. In terms of if you want to write in terms of h, if d is equal to h, suppose d is represented as h, so similar formula 1 minus h upon r, 1 minus 2h upon r, 1 minus 2h upon r. यहाँ पे क्या है 1 minus d upon r, h upon r. G naught 1 minus h upon r. Or when h becomes r, that is the d becomes h equals r, the value should be 0. Yes, the value should be 0. G is equal to 0. That is at the center. इतने डेप्थ नीचे आ गए कि सेंटर पे पहुंच गए. At the center. तो सेंटर पे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है, ग्रेविटेशनल तो सर मतलब जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसका हम क्रॉस करके आए हैं वो भी तो मास है, वो नहीं लगाएगा ग्रेविटेशन लगाते हैं उनकी वजह से ही 0 हो जाता क्योंकि चारों तरफ होते हैं. वो भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है. नहीं, एक बंदा है, एक उधर भी खींच रहा है, उधर भी खींच रहा है, क्या करके दोनों दो हाथ पकड़ के खींच रहा है, दो टांग पकड़ के खींच रहा है. नहीं सर, उनकी मतलब जो फोर्स होगी वो तो बराबर होगी ना, एक सरफेस के पास वो क्लोजर होगा तो वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जबकि जो दूसरा सरफेस होगा उससे ऑपोजिट होगा. नहीं, सेंटर पे है तो यूनिफॉर्मली होगा ना वहां पे. दिस लाइक द कैविटी यहाँ पे आ गया. सो इफ यू आर हेयर तो ये वाली पार्ट भी खींच रहा है आपको ऐसे, तो दूसरा पार्ट क्यों रुका रहेगा? ये बोलेगा क्या स्पेशल लेके है अभी, सभी रुक खींच रहे हैं अपने अपनी तरफ ना, ऑल द पार्ट. तो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फील्ड, एवरीथिंग इज 0. यही चीज रिंग के साथ भी हो रहा है. what is the field at the center of the ring? 0. What's the field at the center of the sphere, solid sphere? What's the field inside the hollow sphere? It is 0 everywhere. It is 0 everywhere. But किसी different place पे अगर यही बात मैं कहूँ कि नहीं यहाँ पे मैंने कैविटी फॉर्म कर दिया here, then what could be the force at this point? Will it be 0? No, it should not be 0. Should be something. Should be something. तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बाय सिमेट्री ऐसे आ गया, सभी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. That's it. Got it? Yes, Note करो first. Effect of acceleration due to gravity on the rotation of the earth. जो ये मेजर है, on the rotation of the earth
क्या हो गया? अच्छा, okay, effect of accelerated gravity. Hey, it's okay. वो तो सर अब ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी रोटेशन अलग है। Okay, चलो ठीक है। Okay, effect on action due to gravity due to rotation of the Earth. Is it okay? Okay, thank you. अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के बाद रोटेट करते हैं. What is the time period of rotation? 24 hours. और साथ में रोटेशन से एक और बात होती है कि जब रोटेशन होता है तो इनकी जो एक्सिस होते हैं पोल के अलॉन्ग और इक्वेटर के अलॉन्ग दोनों में थोड़ा का फर्क होता है. ये थोड़ी सी फैल जाते हैं रोटेशन को. किसी चीज को ऐसे रोटेट कराओ तो क्या होता है, बीच में वो फैल जाएंगे और ऊपर से कुछ दब जाएंगे. अर्थ के साथ ऐसा ही हो रहा है. और है रोटेशन ऑफ द अर्थ में इनकी दोनों रेडियस में फर्क है. और ये है 22 किलोमीटर का. 22 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के मुकाबले में काफी कम है, लेकिन हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा है. 22 किलोमीटर आधे घंटे लगेंगे जाने में बाइक कार. 22 किलोमीटर है डिस्टेंस है. So this is the radius of the earth along the equator and this is the radius of the earth along the pole. लेकिन हमें यहाँ पे रोटेशन में इसको यूज नहीं करना है ना. वो जस्ट एक डिस्कशन कर लिया, बाद में हम उस बात को हमने बाद में मेंशन कर लिया. ओके, अभी इसको छोड़ देते. हमने अभी रोटेशन पे बात करना है. लेट्स टॉक अबाउट द रोटेशन. ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? The 2 pi upon time period t. It is a 2 pi upon 24 hour. नीचे में हमारा है. Yes? कितने?